Welcome to the second video of Excel Financial from Virtual Coaching. In this video, we will be discussing four functions, financial functions related to the loan table that we worked on in our first video. As you can see, हमने अपने first video में calculate किया था कि the amount of our installment will be 47,522 and we'll be paying it throughout the 12 months. So for the sake of this video, हम assume कर रहे हैं कि we don't have this table और हम एक particular period के अंदर let's assume कि हम 8th period की बात कर रहे हैं. You can assume any other और मैं इसको highlight कर देता हूँ so that we can compare our results. हम मालूम करना चाह रहे हैं कि 47,522 के अंदर हमने 8th period में कितना principal amount पे किया और कितना हमने उसमें से interest पे किया. So for the sake of interest जो हमारे पास formula है that is the IPMT, that will find out कि किसी भी particular installment के अंदर interest की amount कितनी थी. So what we will do is last time हमने जो function apply किया था वो हमने calculate किया था using typing. इस दफ़ा we'll go to the function bar. You can also go to the formulas here or insert formula और इसमें financial के अंदर, because we have all these different formulas, financial के अंदर we'll be going to the I and here it is IPMT. Now this is like much easier to understand. The rate of interest, again it's 25% and again it's annual, so we'll divide it by 12. Now PER is the period for which we want to calculate. So हमारे अपने example में we want to do it for the period 8. So 8 is our value here and this is like the total number of payments. So our payments were like 12 और जो present value थी that was 5 lakh rupees. That was in the cell J2. इसके बाद future value का तो I already said कि we will be discussing it in one of our next videos. For the type, if you can see, you have two logical values. One, it can be 0 and it can be 1. So it depends on कि अगर आप ये installment period के end पे pay कर रहे हैं, so we will be entering 0. And if you are paying at the beginning of a period, तो you will have a value of 1. थोड़ा सा इसको देखेंगे. जो मेरे पास already result आ रहा है, which this dialog box is showing, that is 4655. And this is exactly the amount of interest कि जो हम इस period में pay कर रहे हैं. But if इसको अगर आप 0 कर देते हैं तो it gives you the same answer. लेकिन अगर आप इसको 1 करते हैं तो it is giving you an answer of 4560. तो तकरीबन 1 या 2 दिन का extra interest जो है या कम interest जो है वो charge होगा, because in one case you are paying on the 30th and the 31st of a month and in second you are paying on the first or second of a particular month. So it depends कि आपका जो loan का जो agreement है, are you paying at the start of a period or are you paying at the end of a period. For this video I'll use the value 0 and it will give me the value of the same amount. मैं इसमें से ये हटा देता हूँ. So we are paying 4,655. I'll remove the decimals and this is exactly the amount जो हमने इस period के अंदर interest pay किया था. Now for the sake of the principal amount, हमारे पास जो formula है that is PPMT, which means the principal payment amount of a particular installment. Again, without wasting a lot of time, हम formula उसमें जाएंगे and we'll again select financial और इस दफ़ा we will go to PMT के बिल्कुल नीचे it's PPMT and it's the same thing. Rate of interest, again it's the same. So we'll divide it by 12. Installment is the 8th installment out of the total of 12 installments और उसकी जो present value है that is 5 lakh. Again type और future value का हम discuss कर चुके हैं. So our principal amount for the period is 42,866, which is 867. ये थोड़ा सा decimals की वजह से हुआ है. I can say okay और इससे हम ये currency हटा के इसको जब हम round करते हैं तो we get the same amount, 42,867. In the next function we will be going to see the cumulative interest between two particular periods.
IPMT और PPMT के अंदर हमने एक ही इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट पेमेंट की कैलकुलेशन की. इन आवर नेक्स्ट टू फंक्शंस हम इस तरह करेंगे कि बिटवीन एनी टू पीरियड्स वी विल बी कैलकुलेटिंग कि हमने 4 मंथ्स के लिए या 5 मंथ्स के लिए या जितना भी पीरियड्स के बीच में गैप होगा कि हमने उसमें से कितना इंटरेस्ट पे किया है और कितने हमने उसमें से प्रिंसिपल अमाउंट पे की है. सो फॉर द सेक ऑफ आवर एग्जांपल हम पीरियड 3 से लेकर पीरियड 8 तक की कैलकुलेशन करते हैं. आई विल हाईलाइट दिस फॉर द सेक ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी. द फॉर्मूला फॉर द इंटरेस्ट इज cumulative, that is cumulative IPMT. So IPMT is the same from the interest payment, or cumulative mean के between a certain from one period to another वो कितना accumulate हुआ है. So we'll go with the formula bar and we'll go to financial, और ये चूंकि हमारे C में है, so we have this cumulative IPMT and हमें अगेन वही सेम चीजें चाहिए. सो द इंटरेस्ट इज 25% that will be divided by 12. The total number of payments are 12. Present value is 5 lakhs. Now in this example our starting period is 3 and our end period is 8. और हमने जो टाइप सेलेक्ट की थी वो हमने 0 सेलेक्ट की थी बिकॉज हम जो थे हमने वो टाइमिंग रखी थी कि हम शुरू में पे कर रहे हैं या एंड में पे कर रहे हैं. सो हमने 0 सेलेक्ट किया था थ्रू आउट दिस एग्जाम्पल एंड आई से ओके. सो द आंसर इज 40,702. नाउ लेट्स चेक इट आउट. आप इन सेल्स को सेलेक्ट करें और ये आपको सम बता रहा है कि दैट इज 40,702. सो द इंटरेस्ट फॉर दीज मंथ्स जो 3rd मंथ से लेकर जो 8th मंथ तक टोटल जो इंटरेस्ट है वो 40,702 है. We'll apply the same to our cumulative principal. So in this case हम ये कैलकुलेट करेंगे कि पीरियड 3 और 8 के बीच में हमने कितना प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो पे किया है या हमें पे करना है. So again we'll go to the function box and we'll go to financial, और यहाँ से हम cumulative principal की अमाउंट पे आएंगे and we have the same जो रेट है that is the same divided by 12. Total number of payments are 12. Our present value is 5 lakh. Our start period is 3 and our ending period is 8, and we'll go with 0. So जो total interest हमने पे किया है principal amount जो हमने पे किया है that is 244,430. और जब आप इसका सम ले लेते हैं तो दैट गिव्स यू 244,430. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो किसी भी लोन टेबल या अगर आपका लीज का कोई टेबल है एटसेट्रा तो इट कैन बी यूज्ड इन दैट.